Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal and I welcome you back to our IOKM 2022 solutions guys. So far guys हमने first two questions कर लिए हैं and in today's video we are going to see the third question. Okay. So guys without wasting any time let's dive into it. Let me get to the slide guys. Alright. So guys let's see the question. It's a two marker question. So guys read करते हैं ध्यान से. In a trapezoid ABCD, the internal bisector of angle A intersects the side BC or its extension at a point E. Okay, intersect करेगा. Inscribed in the triangle ABE is a circle touching the side AB at M and side BE at the point P. So guys, I've made the diagram beforehand. Let me show you here. So guys, इस तरह से है. एंगल बाइसेक्टर A का बनाया आपने. तो AB के ऊपर M है जहां पे टच कर रहा है ना. M पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है, यही बोला हुआ है, राइट. AB is a circle touching the side AB at M and side BE. Okay, let's draw the trapezoid first. ABCD. A के थ्रू एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो कहां जाके कट करता है? E पे, राइट. दैट्स गिवन टू अस लाइक दिस. M AB को M पे टच करता है and side BE at the point P. Okay, so this point is point P. Right? Find the angle DAE. Okay, DAE find करना है guys. If AB is to MP is to AB is to MP. Okay, MP को कनेक्ट करते हैं. Let's connect M and P. Okay, so AB जो है is twice of MP basically. Okay guys, understood this way? Alright, so let's name them some things. Okay guys, so उससे आसान हो जाएगा हमें डील करना. So guys, यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? Let's see first. तो guys, एंगल बाइसेक्टर है. Let's name it the triangle angle DAE as theta. So guys, since it is angle bisector, this is also going to be theta. And one more thing guys, what is angle AEB? Since trapezium है, these two sides are parallel, so जो AE है, जो AE साइड है ना, जो आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दैट इज लाइक अ ट्रांसवर्सल, है ना. तो एंगल DAE शुड बी इक्वल टू एंगल AEB. सो गाइस, शुडंट दिस एंगल आल्सो बी थीटा? है ना, ये भी तो थीटा होना चाहिए, है ना. सो एंगल, आई कैन राइट हियर दैट एंगल AEB should be equal to angle DAE, right? Alternate angles, right? ये भी थीटा हो जाएगा. Other than this guys, let's say MP is X, right? Let me name as MP as X. तो guys, AB कितना होगा? What is AB? Then 2X, है ना. Also guys, we'll use the property कि guys जो triangle है टच कर रहा है, सर्कल है, so we know guys from an external point सर्कल को जो दो टेंजेंट्स बनती है उनकी लेंथ बराबर होती है, इक्वल होती है, meaning BM is equal to BP. Let's name it as A. This is also A then. Okay, let me name it A and A. So BP is equal to MP. Okay, let me write here. Let me take BP is equal to BM. Sorry, not MP. BP is equal to BM is equal to A मान लेते हैं. तो guys similarly PE कितना होगा? Okay, let me name PE as B. तो guys ये भी तो B हो जाएगा सिमिलर वे में. Now guys, interestingly एक बात देखो, shouldn't AB be equal to BE? Since both of the angles are theta each, है ना, angle BAE and angle BEA. Okay, let me show as angle BAE is equal to angle BEA, है ना, दोनों थीटा हैं. Wouldn't that mean the opposite sides are equal, meaning AB is equal to BE? तो guys AB और BE इक्वल हैं, उसमें से BM और BP दोनों A हैं अगर, and if I am assuming PE as B, then AM is also B. That means AM, okay, let me AB को क्या लिख सकते हैं? I'll show you. AM plus MB is equal to BE को क्या लिखेंगे? BP
plus PE. So what you can see here guys, जो BM है, BM and BP are equal, so we can cancel that. तो बच्चों क्या मिलेगा हमें यहां से, that AM is equal to PE. AM is equal to PE and let us take it them as B. ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं B. बट इंटरेस्टिंग थिंग इज अनफोल्डिंग गाइस. देखो अगर A से जो टेंजेंट, एक टेंजेंट की लेंथ B है तो ये वाली टेंजेंट की लेंथ भी तो B होनी चाहिए ना, इजंट इट? तो जो पूरी साइड AE है, द कंप्लीट साइड AE कैन बी रिटन एज 2B, है ना, क्योंकि E से भी AP और E से दूसरी टेंजेंट भी B आएगी तो टोटल लेंथ AE की कितनी आ जाएगी, 2B आ जाएगी. गॉट इट? नाउ गाइस वन थिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. See it from the converse of BPT basically. Since BM upon BA, देखो यहां पे लिखते हैं, since BM upon BA right is equal to BM upon BA is equal to BP upon BE, है ना, this is equal to BP upon BE, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना. सो बाय द कॉन्वर्स ऑफ BPT यू कैन से PM is parallel to AE, but we know further this ratio और एंगल B कॉमन है, आप ये कह सकते हो that the two triangles are similar, so the same ratio should also be equal to MP divided by AE. Can I say this? Now what does this thing lead us to? So guys, what is BP upon BE or BM upon BA? What is that ratio? A upon A plus B, है ना, ये है ये रेशियो A upon A plus B. And what is this equal to? MP कितना है, X है, right? Finally, what is MP? That is X divided by what is AE? हमने AE कितना निकाल लिया, 2B. So guys, we have got a relation A upon A plus B is equal to X upon 2B. Understood up to this point? Other than this guys, हमारे पास और क्या रिलेशन है, और बड़ा इजी और रिलेशन है यहाँ पे, जो 2x साइड है, because it was given that AB is twice of MP. So AB कितना है, that is A plus B, which is AB, which is 2x. ये रिलेशन भी तो हो गया ना. So can I replace x as, right? I can replace x as A plus B by 2. So let's see then. उसको पुट करते हैं उसमें गाइस, तो क्या मिलेगा, देखो A upon A plus B is equal to, x को क्या पुट कर दिया, A plus B by 2. तो by 2 था, नीचे 2 पहले से था, into 2B. So now let's cross multiply, we'll get A plus B whole square is equal to 4AB. Now guys you can see here, इसको अगर आप expand करोगे, A square plus B square plus 2AB और 4AB को left side ले आओगे, it will be 0. So this will lead us to A minus B whole square, right? You can see guys, ये क्या मिलेगा, A square plus B square minus 2AB is 0, which is A minus B whole square is 0. So this will lead us to say A equal to B. तो guys अगर A equal to B आ रहा है ना, finally we got A equal to B. So let's understand guys what will happen with A equal to B. So each side of the triangle, देखो क्या बन गया, AB की लेंथ क्या हो जाएगी, A equal to B है, 2B हो जाएगी. So is BE and so is AE. AE तो पहले से 2B था, तो तीनों साइड्स ट्राइंगल की क्या बन गई, 2B, meaning the triangle ABE is equilateral. So what does that mean guys? इसका मतलब क्या हुआ, what does this lead us to, कि थीटा एंगल कितना होना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बन गया तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 60 डिग्री, राइट? दैट वुड बी द आंसर. सो थीटा ही तो फाइंड करना था, एंगल DAE फाइंड करना था. सो गाइस द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग इज 60 डिग्री. सो 60 डिग्री वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो गाइस I hope you guys like the solution, right? So guys I would and if you guys like the solution, we'll be keep coming up with such videos
Please like the video and subscribe to our channel if you are finding the videos to be useful to you. Okay, so it will mean a lot to us guys because it encourages us to keep coming up with such videos. Okay, all right guys, we'll see you in the next video, and also keep informing everyone else about Maths Olympiad. Okay, or make them aware if even if they're your juniors or so, है ना, आपके juniors भी हैं तो वो अगले साल तक preparation कर सकते हैं. So at least guide them, right? Tell them कि what it is. ठीक है? So how fun is it to solve these kind of such questions, है ना? Interesting ways find कर सकते हैं. So also guys, if you have done this question, we are able to solve this question in some other way, I'd very much like to know. Please post your solution in the comment box. I'll surely reply it, and if you have done it with some other method, I'll surely review it. All right, that's it guys from my end. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.